Good evening, viewers. This is anchor Kekrazania Solo. You're now watching Hornbill TV's Prime Time. First, the headlines. Prime Minister Narendra Modi hit out at JMM-led alliance in Jharkhand, calling it an infiltrators alliance for allegedly supporting infiltrators and said that it has endangered the identity of Jharkhand. As many as 36 people died on Monday as bus fell into a deep trench along River Gid Jagid near Marchula in district Almora, more than 250 kilometers from Dehradun. Officials say that the 40-seater private bus was carrying nearly 55 passengers when the accident took place. Democratic presidential candidate Kamala Harris vowed to end the ongoing war in Gaza, bringing home hostages and ensure Israel's security and the Palestinian people's right to dignity and self-determination. The Supreme Court has on Monday sought a response from the Delhi government as to why firecrackers ban was barely implemented and has asked to file affidavits about steps taken to enforce the ban on firecrackers in the national capital during Diwali. Those were the top headlines, and now for the news in details. Prime Minister Narendra Modi hit out at JMM-led alliance in Jharkhand, calling it an infiltrators alliance and for allegedly supporting infiltrators, and said that it has endangered the identity of Jharkhand. A conspiracy is being hatched to change the identity, demography of Jharkhand, he added. Modi was speaking at a rally in Jharkhand's Chaibasa on Monday, and Modi further added that the supporters of infiltrators have become the stamp of the JMM Congress RJD alliance and continued that infiltrators are the biggest vote bank. The Prime Minister further accused that the JMM and Congress of making fake documents for the infiltrators. The rally marked Modi's first visit to Jharkhand since the announcement of assembly elections, which will be held in two phases from November 13th and 20, with vote counting set for November 23. जेएमएम कांग्रेस आरजेडी ने झारखंड की अस्मिता को संकट में डाल दिया है। झारखंड की डेमोग्राफी, यहां की पहचान को बदलने की साजिश हो रही है। इसलिए जेएमएम कांग्रेस आरजेडी घुसपैठियों का समर्थक गठबंधन का ठप्पा बन गया है, क्योंकि घुसपैठिए इनका सबसे बड़ा वोट बैंक बन गए हैं। जेएमएम और कांग्रेस मिलकर इन घुसपैठियों के फर्जी कागज बनवा रहे हैं, इनके हर गलत काम का संरक्षण कर रहे हैं। यहां तक कि जब कोर्ट में इनसे पूछा गया तो वहां भी इन्होंने झूठ बोला कि घुसपैठिए हो ही नहीं है। घुसपैठिए आदिवासी बेटियों को निशाने पर ले रहे हैं, झूठ फरेब छल कपट से शादी करके आदिवासियों की जमीन हड़प रहे हैं। ये आपकी रोटी भी छीन रहे हैं, ये आपकी बेटी भी छीन रहे हैं और आपकी माटी को भी हड़प कर रहे हैं। इसलिए आपको रोटी, बेटी और माटी सबकी पुकार को याद रखना है। हमें झारखंड की अस्मिता को बचाना है, झारखंड की पहचान को बताना है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, यहां भाजपा एनडीए सरकार बनेगी, आपने निर्धार किया है बनने वाली है। घुसपैठ पर रोक लगाने के लिए हर कदम उठाए जाएंगे। नई सरकार अवैध तरीके से हड़प की गई भूमि फिर से आदिवासी बेटियों के नाम करने के लिए कानून लाएगी। साथियों, आदिवासी अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए ही बाबा साहब आंबेडकर ने आदिवासी आरक्षण शुरुआत करवाई थी, लेकिन उस समय भी नेहरू जी ने आदिवासियों को आरक्षण का विरोध किया था। इसके बाद जितने साल सरकार पर गांधी परिवार का कब्जा रहा, ये लोग आरक्षण के खिलाफ रहे। अब एक बार फिर इन लोगों ने खुला ऐलान कर दिया है कि आदिवासियों को मिलने वाले आरक्षण को समाप्त कर देंगे। और साथियों,
आदिवासियों से उनका आरक्षण का अधिकार छीनकर ये लोग अपने वोट बैंक को देंगे। इन लोगों ने एक और तरीका निकाला है। ये स्कूलों, कॉलेजों, यूनिवर्सिटियों को अल्पसंख्यक संस्थान घोषित कर रहे हैं। इससे इन संस्थानों में दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों को आरक्षण मिलना बंद हो जाता है। कांग्रेस और उसके साथियों की इस साजिश से भी आपको सावधान रहना है। Democratic presidential candidate Kamala Harris vowed to end the ongoing war in Gaza, bringing home hostages and ensure Israel's security and the Palestinian people's right to dignity and self-determination. The remarks by Harris came at a rally in Michigan just days before the U.S. presidential elections. Addressing the rally, Harris said, as president, she will do everything in her power to end the war, which has been going on in Gaza, and to bring home the hostages and the suffering in Gaza, ensure Israel is secure and ensure that the Palestinian people can realize and their right to dignity, freedom, security and self-determination. She also added that they will continue to work on diplomatic resolutions across the Israel-Lebanon border to protect civilians and provide lasting stability. The Vice President also pledged to lower healthcare costs, cut taxes for workers and middle-class families, and make housing and childcare more affordable. Harris further stressed that healthcare should be a right and not just a privilege. The U.S. presidential elections are set to take place on November 5, with Harris going against former U.S. President and Republican candidate Donald Trump. Trump is aiming to make a comeback to the White House after his bitter exit last time, while Harris is aiming to create history by becoming the first woman president of the U.S. And we are joined today by leaders of the Arab American community, which has deep and proud roots here in Michigan. And I want to say, this year has been difficult, given the scale of death and destruction in Gaza, and given the civilian casualties and displacement in Lebanon. It is devastating. And as president, I will do everything in my power to end the war in Gaza. To bring home the hostages, end the suffering in Gaza, ensure Israel is secure, and ensure the Palestinian people can realize their right to dignity, freedom, security, and self-determination. And we continue to work on a diplomatic resolution across the Israel-Lebanon border to protect civilians and provide lasting stability. And as president, I will work tirelessly toward a future with security and dignity for all people. We'll now take a short break. Stay tuned. कॉलेज बोले तो दोस्ती यारी यारों संग है फ्रीडम सारी फ्रीडम इक्वल्स टाइम ऑफ लाइफ माने जॉय राइड एक्टिवा 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 स्कूटर ले एक्टिवा स्कूटर बोले तो एक्टिवा जिसे बनाने में किसी भारतवासी का पसीना बहा हो उसे खरीदने पर जोर देना चाहिए और ये सबके प्रयास से ही संभव होगा। वोकल फॉर लोकल हमें व्यवहार में लाना ही होगा। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के वोकल फॉर लोकल के आह्वान से प्रेरित उत्तराखंड सरकार इस दिशा में हर महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। प्रकृति,
संस्कृति और विरासत को अपने अंदर समेटे उत्तराखंड में बने प्रोडक्ट एक ब्रांड के रूप में उभरते जा रहे हैं। उत्तराखंड सरकार द्वारा ग्रामीण उद्यमियों एवं कृषि उत्पादों को भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। उत्तराखंड सरकार द्वारा लॉन्च किया गया हाउस ऑफ हिमालयास ब्रांड क्षेत्र के प्रामाणिक हस्तशिल्प उत्पादों को बढ़ावा दे रहा है। वहीं उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है जिसे एक दिन में सबसे अधिक 18 GI टैग मिले। ये सभी प्रयास उत्तराखंड सरकार के वोकल फॉर लोकल के प्रति प्रतिबद्धता का प्रमाण है। लोकल उत्पादों को अपनाकर हम न केवल उत्तराखंड की विरासत को सहेज रहे हैं बल्कि स्थानीय लोगों को आर्थिक रूप से सशक्त भी बना रहे हैं। आइए इस त्योहार स्थानीय उत्पादों को अपनाकर उत्तराखंड की प्रगति में अपना योगदान दें और साथ मिलकर एक आत्मनिर्भर और समृद्ध उत्तराखंड बनाएं। कॉलेज बोले तो दोस्ती यारी, यारों संग है फ्रीडम सारी। फ्रीडम इक्वल्स टाइम ऑफ लाइफ, लाइफ माने एंजॉय राइड। एक्टिवा एक्टिवा एक्टिवा, स्कूटर ले एक्टिवा, स्कूटर बोले तो एक्टिवा। कॉलेज बोले तो दोस्ती यारी, यारों संग है फ्रीडम सारी। फ्रीडम इक्वल्स टाइम। Welcome back. Heading on to the next news. As many as 36 people died on Monday as a bus fell into a deep trench along River Gid Jagir near Marchula in District Almora, more than 250 kilometers from Dehradun. Officials say that 40-seater private bus was carrying nearly 55 passengers when the accident took place. Uttarakhand Chief Minister Pushkar Singh Dhami has ordered a magisterial probe in the incident as 36 deaths were confirmed. The incident took place in the morning as the bus was going from Naini Danda in Pauri to Ramnagar via Almora. According to Almora District Administration, death of 36 passengers were confirmed, but numbers may go up as several injured have been admitted to the Ramnagar hospital. 3 passengers with severe skull injuries were airlifted to AIIMS Rishikesh. Meanwhile, Prime Minister Narendra Modi consoled the Almora road accident and said his condolences to those who have lost their loved ones in the road accident and also wish for speedy recovery for the injured. Local administration is making all efforts for relief and rescue of the victims under the supervision of the state government. CM Dhami announced compensation of ₹4 lakh each to the families of the deceased and 1 lakh to the injured passenger. The Chief Minister further ordered Commission Kumaon Division Deepak Rawat to conduct a magisterial inquiry in the incident and ensure that no guilty persons or officials are spared. मरचूला रामनगर के पास अल्मोड़ा जनपद में बहुत ही दुखद घटना घटी है। एक गहरी खाई में बस गिर गई जिससे अनेक लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है और कई घायल हुए हैं। उन सभी घायलों को तत्काल स्वास्थ्य सुविधाएं मिले, उपचार मिले, उसके लिए सभी एम्बुलेंस इत्यादि की व्यवस्था तत्काल वहां पर की जा रही है। सभी को भेजा गया है, सभी अफसरों को मौके पर जाने के निर्देश दिए हैं और इस पूरी घटना के लिए कुमाऊं कमिश्नर को मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए हैं और संबंधित विभाग के लोगों को निलंबित करने के भी आदेश दिए हैं जो भी इस घटना से संबंधित हैं। कहीं भी कोई लापरवाही होगी तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अभी तो हमारी प्राथमिकता है इलाज मिले जिससे कि उनका स्वास्थ्य जो है जल्दी ठीक हो और इसके लिए सभी अस्पतालों को भी निर्देशित कर दिया गया है। सभी अधिकारी मौके पर जा रहे हैं। हमारी चीफ सेक्रेटरी लगातार इसकी मॉनिटरिंग कर रही हैं और घायलों के साथ सरकार खड़ी है। जो इस घटना में जिनकी मृत्यु हुई है उनके साथ भी, उनके परिवारजनों के साथ भी मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि जो इस दुखद घटना में जिनकी मृत्यु हुई है भगवान उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनके पारिवारिक जनों को जो आकस्मिक रूप से इतना बड़ा कष्ट आया है इस कष्ट को सहन करने की शक्ति प्रदान करे और घायलों को जल्दी भगवान उनको उचित उपचार भी मिले और जल्दी ही वो स्वस्थ हों। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं।
और जल्दी से जल्दी लगातार हमारा प्रयास है कि कहीं पर अगर हेली एम्बुलेंस की आवश्यकता है तो हेली एम्बुलेंस के लिए भी वहां पर कह दिया गया है। जो गंभीर रूप से घायल होंगे उसको तत्काल इमरजेंसी में अस्पतालों तक पहुंचाया जाएगा। Tripura police arrested an individual on Sunday night after Yaba tablets were recovered from the vehicle he was driving. The driver, identified as 28-year-old Ratan Nama Sudra from Karikai, was accompanied by another person identified as 30-year-old Mehboob Alam from Loirpur, Jalal Nagar. However, he managed to give slip to the security personnel. Police conducted a search operation at a checkpoint on November 3rd, where they intercepted a vehicle. During the search, police found 750 packets of Yaba tablets valued at estimated rupees 3.75 crore on the black market. The major operation was led by Officer in Charge S. Bhattacharya on the Pansinagar police station. আমাদের অনারেবল সিএম এর যে নেশামুক্ত ত্রিপুরা অভিযানের যে মিশনটা ওটার অন্তর্গত আমরা আমাদের পুলিশ অথরিটি রিসারের নির্দেশে আমরা আমাদের নাকার চেকিং পয়েন্টগুলো আমরা টাইট রেখেছি পশ্চিমকালেও। আর ওই আজকে 3 নভেম্বর আমরা 9:30 থেকে 10:30 রাত্রি নাকা চেকিং চলাকালীন এখানে ওসি পানিসাগর এবং অন্যান্য স্টাফরাও মিলে এখানে একটা ভেহিকেল সাসপেক্টেড ভেহিকেলকে এখানে ডিটেইন করা হয় নাকাতে, যেটা আসাম সাইড থেকে আসছিল। ওটা চেকিং করার পর গাড়ির ডোরের ভিতরে দরজার ভিতরে কনসিল করা ছিল সাসপেক্টেড ইয়াবা ট্যাবলেট কন্ট্রাব্যান্ড আইটেমস, যেগুলি আমরা কাউন্ট করেছি সব লিগাল ফর্মালিটিস ইন প্রেজেন্স অফ ইন্ডিপেন্ডেন্ট উইটনেসেস অ্যান্ড গভর্নমেন্ট এমপ্লয়ি। ওটা আমরা কাউন্টিং করার পর এখানে ছোট পরিমাণের প্যাকেট যেগুলি ভেতরে ইয়াবা আছে ওগুলি আমরা কাউন্ট করেছি 750 প্যাকেট হয়েছে, যার ভিতরে টোটাল 1,50,000 ট্যাবলেটস রিকভার হয়েছে। এবং এইগুলি ব্ল্যাক মার্কেট ইন্টারন্যাশনাল মার্কেট এগুলির দাম 3.75 crore। আর আমরা এইটার কারবাইয়ের জন্য আমরা একটা স্পেসিফিক এনডিপিএস কেস পানিসাগর পিএসে আমরা রেজিস্টার করছি। We'll now take another short break. Stay tuned. कॉलेज बोले तो दोस्ती यारी यारों संग है फ्रीडम सारी फ्रीडम इक्वल्स टाइम ऑफ लाइफ माने जॉय राइड एक्टिवा 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 स्कूटर ले एक्टिवा स्कूटर बोले तो एक्टिवा। Welcome back. The Supreme Court has on Monday sought response from the Delhi government as to why firecracker ban was barely implemented. The apex court has asked Delhi government and Police Commissioner of Delhi to file affidavits about steps taken to ensure the ban on firecrackers in the national capital during Diwali. Delhi government and Police Commissioner shall highlight what steps they propose to take so that this thing does not happen next year, said the Supreme Court, and also asked governments of Haryana and Punjab to file affidavits indicating the number of incidents of stubble burning during the last 10 days of October. अरे पोल्यूशन से तो परेशानी हो रहा है आदमी को, क्या है वही बीमारी का ये है, सांस लेने में दिक्कत हो रहा है, बहुत परेशानी हो रहा है, तबीयत खराब हो रहा है आदमी का, सर्दी जुकाम पड़ रहा है ज़्यादा। बचने के लिए वही है, घर से नहीं निकलना चाहिए, उनको घर में रहना चाहिए, वही मैं बताऊंगा। हम लोग का तो चल जाएगा कि चलो ये है, उनका तो इम्यूनिटी कमज़ोर होता है, उनको घर में रहना चाहिए। हाँ, आज से खुल रहा है स्कूल, तो बच्चे को तो वही है अपना वो मास्क लगा के जाए, चाहे जो बुजुर्ग लोग हैं उनको भी मास्क लगाने का मैं वो कहूँगा। आने वाले समय में यूसीसी लागू होगा, इसकी घोषणा गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने की है। हम सब इसका स्वागत करते हैं और न केवल झारखंड में बल्कि पूरे देश में यूसीसी लागू होना चाहिए। The first session of the newly elected assembly in Jammu and Kashmir kick-started on
Monday with the introduction of a resolution opposing the revocation of Article 370 and restored a special status of Jammu and Kashmir. An uproar erupted in the Jammu and Kashmir Assembly when PDP People's Democratic Party leader Wahid Para, representing the Pulwama constituency, introduced a resolution against the revocation of Article 370 and to restore the special status of Jammu and Kashmir. Ruckus broke out in the assembly after BJP demanded that the remarks be expunged and the resolution disallowed. PDP Supremo Mehbooba Mufti lauded the PDP leader for introducing the resolution in the assembly. However, the Chief Minister of Jammu and Kashmir, Omar Abdullah, stated that the resolution was introduced merely for the cameras and holds no real significance. He added that if there had been a genuine intention behind the resolution, it should have been discussed with the National Conference. Notably, restoration of Article 370 and Jammu and Kashmir statehood as well as implementation of the autonomy resolution was one of the main promises made by the National Conference in its manifesto for the Jammu and Kashmir elections. Honorable Speaker Sahab, चलिए जनाब, फर्स्ट डे फर्स्ट शो. हमें मालूम था कि इस तरह की तैयारी की जा रही थी ऑनरेबल मेंबर की तरफ से, लेकिन हमें उम्मीद थी कि शायद आज स्पीकर के इलेक्शन और लेफ्टिनेंट गवर्नर के एड्रेस को छोड़ के और फिर ओबिचुअरी रेफरेंसेस, क्योंकि हमारे एक सिटिंग मेंबर आज हमारे दरमियान है नहीं, बहुत से और हमारे एक्स मेंबर्स हमारे साथ है नहीं, उसके बाद हम जो है अपना ये सिलसिला शुरू कर लेते. लेकिन चलिए, आपके ही इलेक्शन के बाद आपको मुबारकबाद पेश करने के बजाय हम इसमें पड़ गए. मैं सियासी तकरीर आज करना चाहता ही नहीं था, इसलिए मैंने कोई सियासी बात शुरू में की नहीं. हालांकि मेरे मेंबरों की तरफ से जो कहा गया गलत नहीं कहा गया था. मैं इसलिए पहले नहीं उठा क्योंकि हाउस का ये तरीका रहता है कि पहले बाकी ऑनरेबल मेंबर्स बोलते हैं, फिर लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बोलता है और उसके बाद लीडर ऑफ द हाउस बोलता है. मैं उठा इस उम्मीद के साथ कि मेरे बोलने के बाद, क्योंकि मैंने पूरे हाउस की तरफ से बात की, हाउस एडजर्न होगा और हम दोबारा लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का खुतबा सुनने के लिए जमा होंगे. लेकिन चलिए, थोड़ा सा रिवर्स हुआ. और That's all for the Prime Time Bulletin. This is your anchor signing off.